Good morning, everyone. Today we'll be reading this new topic, which is China's new villages in Arunachal Pradesh. So, why is it in news? Recently, there have been reports that China is trying to construct three villages in Arunachal Pradesh near the bordering areas. And ये कहाँ पर है? It is somewhere near the Bamla Pass. Now, where is this Bamla Pass? अगर मैं इसको locate करूँ map में, so here you have Bhutan, here is the pass, and the right you have the Arunachal Pradesh. So ये जो beach वाला area है, this area has the Bamla Pass. Okay. Now if we talk next, the Bamla Pass is one of the 4 officially agreed BPM. BPM is the border personnel meeting points. These are the points जो officially agreed हैं between the Indian Army and the Army of China, which is the People's Liberation Army of China. So इन दोनों के बीच में जो agreed border personnel meeting points हैं, one of them is this pass. Now, in 2020, earlier in 2020, in the start of 2020, China had begun work on a strategically significant railway line. यहाँ पे चाइना ने एक रेलवे लाइन स्टार्ट की थी that will link the Sichuan province with Tibet. Now, where is this province? Sichuan province is here. ये अरुणाचल प्रदेश है आपका. Wait a second, I'll clear it. So यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है. Here you have Bhutan. ये जो राइट साइड में चाइना का एरिया है, दिस इज द सिचुआन प्रोविंस. यहाँ पे चाइना इन अर्ली 2020 tried building a significant railway line which connected Arunachal Pradesh, the nearby province, to Tibet. Now coming next, if you want to locate a few more areas in this map, अगर ये India China border है, so here you have the Aksai Chin. This border is disputed area, disputed border. Here you have Tibet, then you have Sikkim here छोटा सा, then you have Bhutan, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, and the bordering line is the line of actual control, LAC. Now key points. So what do we know about the new village that is being built last year? So यहाँ पे अगर देखा जाए, so the satellite images here show कि एक full-fledged village has been built. China has built a full-fledged village on the banks of the river सारी चू. ये जो river है, इसके banks पर चाइना ने एक village full-fledged village construct कर दी है. Now the village is located across the LAC. आप यहाँ पे ध्यान रखिए, it's not LOC, it is LAC. So China यहाँ पे has already constructed this village. And earlier China had built a permanent construction of military barracks. So धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि China is trying to expand, China is trying to cover more and more areas near the bordering areas of Arunachal Pradesh. So the area, अगर इस area की हम बात करें, this has been under the Chinese control since 1959. लेकिन अगर एक और चीज हम देखें कि यहाँ पे अगर हम मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, so this मैकमोहन लाइन is recognized by India but is not recognized by China. यहाँ पे मैकमोहन लाइन is not recognized by China. And after the 1962 war, which India lost, इंडिया चाइना से जब ये वॉर हारा था, इसके बाद इंडिया हैड स्टॉप्ड पेट्रोलिंग इन दिस एरिया. सो चाइना कंसिडर्स द मैकमोहन लाइन इलीगल. हम इस मैकमोहन लाइन को ऑफिशियली मानते हैं, बट चाइना कंसिडर्स इट इलीगल. व्हाई? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 1914 में जो कन्वेंशन, जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये साइन किया था कन्वेंशन, they were not having the rights to do so. So ये जो मैकमोहन लाइन है, this is illegal according to the Chinese. ठीक है. So हमें एक चीज पता चलती है, what we summarize is McMahon line is officially recognized by India, which is not recognized by China. Coming next, so what are the other areas, the other spots of disagreement? ठीक है. अगर हम देखें तो काफी सारे पॉइंट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज. पूरा जो बॉर्डर एरिया है इंडिया चाइना का, उसमें अराउंड 2 dozen स्पॉट्स हैं जहां पे LAC में और अदर सेक्टर्स में जहां पे इंडिया एंड चाइना डू नॉट अग्री. अकॉर्डिंग टू चाइना वो उनके एरियाज हैं, अकॉर्डिंग टू इंडिया वो हमारे एरियाज हैं. सो व्हाट इज दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? अगर देखा जाए तो ये LAC क्या है? दिस LAC इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. नाउ व्हाट आर दीज 3 सेक्टर्स? द ईस्टर्न सेक्टर,
जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला एरिया है. देन यू हैव द मिडल सेक्टर विच इज नियर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड यू हैव द वेस्टर्न सेक्टर विच इज इन लद्दाख. ईस्टर्न, मिडल एंड वेस्टर्न. So if you look at the map above, sorry, we see here that you have the eastern sector here. So you have the eastern sector here, then you have the middle sector, then you have the western sector near the Ladakh area. तो ये हमारे 3 different sectors हैं of LAC, which is the line of actual control. Now, what is the case of Arunachal Pradesh? According to India, the state of Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India. ये इंडिया का ओपिनियन, इंडिया का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है that is an integral part and inalienable part of India. Whereas if we talk about China, चाइना का क्या ओपिनियन है? चाइना क्या कहता है? It claims that the entire Arunachal Pradesh as South Tibet. सो यहाँ पे इवन फॉर दिस इंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया एंड चाइना के जो ओपिनियंस हैं दे आर एक्सट्रीमली डिफरेंट. अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए, इंडिया के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, वेयर एज इन केस ऑफ चाइना अगर हम देखते हैं, सो चाइना के अकॉर्डिंग इट इज साउथ तिब्बत. नाउ धीरे धीरे चाइना का इंटेंशन क्या है? सो चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस, चाइना इज trying to gain maximum control and claim of the area. ठीक है. Now what are the implications? अगर implications की बात की जाए, so what are the implications on India? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि security concerns हैं. First and the foremost is the security. हम security point of view से बात करेंगे. ठीक है. So security point of view से अगर बात की जाए, so a village near the border will largely improve the efficiency of the military personnel and material transportation. ये हमको यहाँ पे material transportation, logistic supplies, military personnel की help के लिए, convenience के लिए, efficiency के लिए, a village near the border is extremely helpful. Now in situations of direct standoff, अगर हम direct standoff की बात करते हैं, जैसा अरुणाचल प्रदेश, near the अरुणाचल प्रदेश border की बात की जाए, या डोकलाम के टाइम पे जो डोकलाम standoff हुआ था, या recently the लद्दाख standoff, जब लद्दाख में काफ़ी गालवान वैली और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा tensions थे, so China in that case might be at an advantageous position. यहाँ पे हम चाइना को advantageous position पे रख सकते हैं. ठीक है. Now, if you talk about the Doklam issue, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस में इसको कवर करें, so the Indian troops intervened to block the path of Chinese soldiers who were engaged in building roadworks. So Doklam Plateau के एरिया में, near the Doklam Plateau, when the Chinese were trying to build roadways, उस टाइम पे इंडियन ट्रूप्स इंटरवीन्ड. सो यहाँ पे जो इशू आया था, यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ आया था, दैट वाज द डोकलाम इशू. Okay, now if we talk about the recent steps that are taken by India, now India also has to take certain steps यहाँ पे, ताकि इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो रिड्यूस रहें, या चाइना डज नॉट, सो अगर हम चाइना को रोकना चाहते हैं एक्सपैंड करने से, देयर हैव टू बी सर्टेन स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन बाय इंडिया. नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट in the recent past has India actually done? Now if you look here, India will spend 10% of the funds of the border area development program, जो BADP है, इसके जो 10% funds हैं, they'll be only for the improvement of infrastructure along the Chinese border. Initially अगर हम देखें, so independence के बाद our more emphasis, more focus was on the Pakistan border. But जैसे ही China का influence has been on the rise in the past decade, we see that हमारा focus has moved towards the Chinese border. So यहाँ पे clearly mentioned है कि border area development program के 10% funds जो हैं, they will straight away go to improve the infrastructure along the China border. Now coming next, we have the BRO, the Border Road Organization. So BRO constructed this Daporijo bridge. ये जो ब्रिज था that was constructed over the Subansiri river in Arunachal Pradesh in just a span of 27 days. इतने short span में ये पूरा एक ब्रिज जो था ये construct किया गया था. Okay, and it links roads leading up to LAC between India and China. So ये basically हमारे troops, हमारी army, हमारे troops के लिए help करने के लिए ये bridge was constructed along the Subansiri river in Arunachal Pradesh. ठीक है. Now the next point we see कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली laid the foundation of a tunnel नेचीफू,
ये जो टनल थी इसका फाउंडेशन ले किया गया इन द वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है इसका अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इसका सबसे लेफ्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यू हैव द वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट हियर। सो इसके यहाँ पे भी एक टनल का इनॉग्रेशन रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर हैज डन। सो अगर हम देखें तो काफी ज्यादा फोकस हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया पर एंड स्पेशली इन द इंडिया चाइना बॉर्डर पर गवर्नमेंट दे रही है। Okay, apart from this, the BRO is already constructing an all-weather tunnel. हम एक all-weather tunnel भी construct कर रहे हैं इन अरुणाचल प्रदेश। मैक्सिमम चीजें जो देखी जा रही हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आपके ईस्टर्न सेक्टर में ही हैं। Now coming next, the state government of Arunachal Pradesh has advocated selection of 10 census towns along the India-China border as pilot projects for infrastructure development in order to stop people living along its international borders. तो हम लोग यहाँ पे जो आपकी स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है दैट हैज सिलेक्टेड 10 सेंसस टाउन्स अलोंग द बॉर्डर। ठीक है, अगर आप और देखना चाहें तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज हो जाती हैं, बट यू कैन ऑल्सो रीड देम कि आपका बोगी बील ब्रिज भी आ जाता है। You also have the Indian Air Force inaugurated the resurfaced runway at India's easternmost village, Vijayanagar, Changlang district in Arunachal Pradesh. So आप देख रहे हैं कि apart from army, even the Air Force is interested in the eastern areas. Then you have the Bogibeel Bridge here, then you have the Siseri River Bridge here. ये सारी जो चीजें हैं, they are becoming important month after month, year after year. Now coming to the Indian Army after the Indian Air Force, so the Army conducted this exercise, Him Vijay. Him Vijay exercise was conducted in Arunachal Pradesh and Assam with its newly created integrated battle group. So Indian Army ने ये exercise Him Vijay conduct करी थी in Arunachal Pradesh and Assam with its newly created integrated battle groups. If you want to know more about the integrated battle groups, please let me know. मैं अगले किसी वीडियो में इसको कवर कर दूंगी. Now, if we focus on the Bogibeel Bridge, Bogibeel Bridge is very important, which is India's longest road rail bridge. India's longest road rail bridge connecting Dibrugarh. Dibrugarh is in Assam. So it connects Dibrugarh in Assam to Pasighat in Arunachal Pradesh and was inaugurated in 2018. So what becomes important? ये longest road rail bridge है, Bogibeel Bridge, which connects Assam and Arunachal Pradesh. And what is its importance? It will facilitate quicker movement of troops and equipment to the areas near the border. So इस bridge की क्या importance है कि ये हमारी army and other troops की help करेगा for the movement of troops and equipment to the nearby areas of the Indo-China border. So if we summarize and if we come to the way forward, India needs to be vigilant enough. India has to be vigilant enough. India को काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या-क्या developments are being made by China across the India-China border so that we protect our interests. And further, we should also focus कि क्या हमको अपनी तरफ से steps लेने चाहिए for increasing and improving infrastructure. हम क्या-क्या infrastructure बना सकते हैं so that हमारे border में India-China border पर कोई difficulties ना आए and that the areas in its territory to ensure movement of personnel and other logistical supplies. So हमको एक proper infrastructure develop करना चाहिए across the India-China border because अगर by chance एक स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन और मे बी अ वॉर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आ जाता है, सो वी द आर्मी द एयर फोर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड अक्रॉस द इंडिया चाइना बॉर्डर. दिस वाज इट फॉर टुडे. We focused mostly on the India-China border issues, especially in the eastern sector of Arunachal Pradesh, and the source of this news was The Hindu. I hope you liked it. Stay tuned. Thank you.